قدم قدم پہ بہاروں کا کارواں دیکھا، جہاں بھی آپ گئے نور حق ارزاں دیکھا، اور بلندیوں پہ وہی قوم جاتی ہے اقبال، جس کی صفوں میں ہو سچا امام اور کامل رہبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قرآن و احادیث مبارکہ سے اسلام میں امامت کا مقام و رتبہ ثابت ہے۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ: ہم نے بعض لوگوں کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں، اور 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں ایک عادل امام ہے۔ آج انجمن پروگرام میں آپ کی ملاقات ہم ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے ناظرین 1 سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، 50 سال نہیں، بلکہ جنہوں نے اپنی زندگی کے 60 سال یعنی 60 ایئرز آپ نے امامت میں گزاری۔ میری مراد جناب الحاج شیخ ادریس محمد بخش دامت برکاتہم عالیہ سے ہے۔ الحمدللہ امام محمد بخش دامت برکاتہم عالیہ ابھی حال ہی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ 1 صدی یعنی 100 سال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے حکم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے 100 سال زندگی آپ نے پورا کیا ہے۔ البتہ ناظرین 100 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے بالیقین، اور 100 سال کی عمر میں جن کے لبوں پر ذکر الہی اور دل میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی ہو، وہ حقیقت میں ایمان و استقامت کی زندہ مثال ہوتی ہے۔ یہی نہیں، محمد بخش دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کی تعلیم، اصلاح معاشرہ اور عبادت الہی میں آپ نے گزاری ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس عمر تک عبادت اور خدمت میں لگے رہنا یہ بہت معنی خیز ہے، اپنے آپ میں اس کا بہت بڑا مطلب نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس عمر تک یقیناً پہنچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور اس عمر تک پہنچ کر امامت کا درجہ
حاصل کرنے کے لیے امام کے فرائض انجام دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام و اکرام ہے۔ امام شیخ ادریس محمد بخش کی پیدائش 100 سال پہلے لاونیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوتی ہے۔ یہیں پر ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی۔ ظاہر ہے اس وقت زندگی گزارنا آسان نہیں تھا۔ انسان کو 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت و مشقت کرنی پڑتی۔ امام صاحب نے بھی جوانی کے ایام میں بڑی سختیاں جھیلی۔ Au fait, ce qu'il raconte moi, Yang commence le travail avec 75 roupies le mois. Participer, tu as 9 enfants pour guetter. Alors, parfois, tu as des difficultés, tu as haut et bas. Ce qui me rappelle, Yang maman, parfois nous gagnons briani. Mais je dis que imam amène manger la case parce que maman dit que les amis sont namaz. Les amis sont namaz, alors banak met de takeaway, donner amène la case, alors quand amène la case, de la maman garder servir tous ses enfants. Alhamdulillah, Allah se favorise qui garde nos papas jusqu'à 100 ans. ان مشکلات کے باوجود امام صاحب کے چہرے پر کبھی شکایت، نا امیدی یا مایوسی کا سایہ تک نہ دیکھا گیا، بلکہ ایمان چٹان کی طرح مضبوط اور ہمیشہ اللہ پر کامل یقین رہتا۔ Et me rappelle un jour, je mange pas à manger à la case. Maman dit que j'ai peine à manger. J'ai un bon bouquet d'un coup là. Il prend une marche dans le bazar. Une marche dans le bazar. C'est un peu moi, c'est un faire l'esprit de travail derrière Allah. Avant quelqu'un. En même temps, je dis que j'ai qui peut faire. Je me dis, mais dans la case, on fait une fatiha. Dans la case, on fait une fatiha. Quand on finit de faire fatiha, je me donne une petite casse. Il passe bazar dans cette commission là. Moi, je dis que ça, moi, il y a tawakkul dans Allah, qui Allah a fait quelque chose. Ça, il raconte. شاید اس لیے آپ نے سرکاری نوکری کو بھی قبول نہیں کیا اور پوری زندگی دنیا کی نظروں میں امام صاحب بن کر رہنا پسند کیے۔ En effet, quand il fait 6e, il finit par ce 6e, et là, il y a des camarades. Ce camarade, ils ont appelé pour un professorat. Il dit non, je ne vais pas prendre professorat, moi. Je préfère faire quelque chose d'autre. Il choisit Imam. J'ai l'amour pour ça. Alors, il travaille bien dur même. Et pendant ce imamat, il fait tout ce qui est possible. وہ امام جو نہ صرف ایک قائد رہے بلکہ روحانی پیشوا، اخلاقی رہنما، معاشرتی معلم اور امت کے دکھ سکھ کا ساتھی۔ Allez, Eliem va donner son azan. Parce qu'il y a personne pour lui donner azan. Alors il donne son azan. Quand on nettoie le masjid aussi, parce qu'il n'y a personne, bien il nettoie le masjid en entier. Et tous les vendredis, tous les jeudis, il fait madrasa aussi. Et madrasa, dans le jeudi, il promène les enfants. Il fait nettoyer le masjid partout. Vendredi, bonheur, il finit à aller, il met une natte sur une chose tout. Il fait masjid un nour là, sa beauté là. Même sur la cour, sur le nettoyage, de fond en comble. Un petit l'herbe, un petit sol, pas qu'un doit pousser. Il plante soufflé lui-même, il arrose lui-même.
tout ce qui appelle khidmat masjid qui est capable de faire avant d'une commande dans masjid Petit Béazé. Je travaille là-bas, deux là-bas, elle est venue ici en 1960. En 1960 jusqu'à aujourd'hui, il travaille dans un seul masjid. Et ce majlis, tu les fais. Avant, tu fais un majlis de porte en porte. Maintenant, ils sont changés, ils font un majlis même, mais nous n'avons pas de mohabbat dans le monde là. Avant, quand tu peux faire un majlis de porte en porte, tiens l'autre chose. इमाम शेख इदरीस मोहम्मद बख्श दामत बरकतुम आलिया का सरापा नहायत सादा, पुरसुकून और बावकार है। जिस्मानी तौर पर आप दुबले पतले हैं, मगर इनमें एक रूहानी क़ुव्वत मौजूज़न है। चेहरा रोशन, पुरनूर, बरसों की इबादत और रब्बे कायनात के हुजूर में गिरिया वजारी की लकीरें नुमायाँ। जिस्मानी तौर पर इमाम साहब बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आते, मगर किरदार और इरादे में पहाड़ सी मजबूती, आवाज़ नर्म, धीमी और दिलों में उतर जाने वाली ऐसी कि जैसे अल्फाज नहीं बल्कि दुआएं फूल बनकर बरस रही हों। Jamais d'une sur la voix avec personne. Et jamais d'une critique à nos autres massabs. Qui sont indiens, qui sont chrétiens, qui sont chinois, qui sont... C'est la main de mon père, tu viens là, tu viens cause aujourd'hui. C'est la main de notre prêtre aussi, tu viens cause aujourd'hui. इमाम साहब के चेहरे पर अक्सर मुस्कुराहट होती, वो मुस्कुराहट जिसने सैकड़ों गमज़दा दिलों को हौसला दिया और बेशुमार लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखा। Point de maillette, point contentement, tout le temps il est là, il est présent. Et premier du monde, c'est une maillette, premier du monde qui va dire. Banamine Getli là, allez, même le soir, et né du matin, il faut aller. Mais il faut lever pour se faire, hein, pareil. Pas dire que nous sommes l'écho, non. Et pendant les TKF, il manque de manger. Il dit, on n'a pas besoin de quitter manger, on ne va pas quitter. Il y a des gens qui restent loin. Alors, grand matin, il finit qui doit TKF, doit manger, doit boire. Et même parfois, ils en ont d'autres linges, ils lavent. Maman, tu laves. Maman, il donne un coup de main. Surtout, maman, il donne beaucoup de coups de main dans la chose, même pour manger même. Parfois, il y a une personne, ils donnent un coup de main ensemble. आज से 60-70 साल पहले इल्म हासिल करना बहुत मुश्किल था। न मदारिस, न किताबों की फरावानी और न सफ़र की सहूलत। ऐसे दौर में भी इमाम साहब ने तने तनहा मुश्किल हालात का सामना करते हुए हाथ में चिराग उम्मीद और दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिए वो अक्सर दूर दराज सफ़र तय करके किताबें ख़रीदते और इन्हीं किताबों ने उनकी शख्सियत में वो जलाल और जमाल पैदा किया जिसकी रोशनी क़यामत तक फैलती रहेगी। Quand il commençait, il apprend dans Zarul Muslimin, ce premier kitab qu'il prend. Dans Zarul Muslimin, il apprend namaz et de là, il commence à build up sur l'éducation. Pas de stade. De là, il commence à faire un livre. Il dit, il m'a passé ici jusqu'à pour lui, pour faire livre, gain d'éducation. De là, il commence à faire un hadith, un kitab.
Nelen fait amène des vidéos, un peu sur un livre, un tchatcha déo, il envoie les livres. De ça, il build up sa l'éducation là. Assez sur l'éducation est énorme. Quand on écoute les faire cause bas, faire causerie dans ma zone, vous avez écouté ça l'éducation là. Quand il fait un discours là, où est étonné. Ça silence complet. Tout le monde reste étonné et s'écoute l'IM. Les mourir avec Maulana Abdulalim Siddiqui Rahmatullah. En passant, vous avez tous les temps, quand je vais rester sur mon éducation, sur mon masail, mon masla, vous demandez, vous avez Maulana Bashir Ahmad Kinou. Ou soit, les contacter Maulana Shamim Azhari. Ça, des personnes, tous les temps, vous avez contact avec lui. N'importe quel problème qu'il y a, ils sont maintenant, ils gagnent le renseignement. Alhamdulillah, Allah donne un jannat. Alhamdulillah, tous les temps, ils restent attachés avec ça. Pas juste ça, c'est Maulana Akram Naimi Rahmatullah alayhi, mon mourir avec lui. Tial Kotli, il y a 6 heures sur le bas, il apprend à lui. Il apprend beaucoup de choses avec lui. Et d'autres Maulana encore, Maulana Kalim, d'ici pareil, viennent là, nous invitons, viennent là dans la maison, viennent dîner, nous faisons causer bien, alhamdulillah. Tout le monde qui est venu, depuis ma connaissance, nous invitons. Et ce qui est plus en là-dedans, il y a un cheikh, sur Deo, sur Madina, venu. Quand on vient là, je ne peux pas assis au siège, je ne peux pas assis en bas. Je ne peux pas assis là-haut, ni assis en bas. De faire les autres manger. Ça, c'est une chose extrême. Zaymon pensait qu'il y a un jour sur Déo. Il n'est pas comme papa, il n'est pas comme langue mauricienne, il n'est pas comme ourdou, il est comme arabe. Il vient assis en bas là. Faire dire papa, faire lui manger. Comme ça, beaucoup d'autres. Moi, on a Ishaq Kadri, quand il est venu, il y a un genou, il donne des félix là. Ça, c'est un extraordinaire. इमाम साहब हमेशा नौजवान मुसल्लियों और अपने अहल खाना को तालीम हासिल करने की नसीहत करते, क्योंकि तालीम वो चिराग है जो ज़िंदगी की तारीकियों को रोशनी में बदल देता है। वो हमेशा ताकीद करते कि सीखो, पढ़ो और आगे बढ़ो, खुद को दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनाओ। Tous les enfants viennent bien passer. Ils mettent sur l'enfance, sur l'éducation. L'éducation est importante. Et ça, à l'époque-là, moi, j'ai une affaire. Nadia, tu ne fais pas besoin de travailler. Mais mon maman a insisté. Puis dire, tu fais besoin d'éducation. Ça même pour tout dans la vie. Si vous êtes dans l'éducation, vous gagnez tout. Alhamdulillah, tous les enfants sont bien arrivés. Ils amènent en colère qui gagne. Tous les temps, tu es dans la droiture. Et ils disent, Dieu qui est là, ça nous bat ensemble. Même souvent les enfants, même, ils disent, mon parle qu'ils ont la guerre, ils ont séparés. Ils ont tout venir là. Et quand nous venons là, il faut tout venir. Si quelqu'un va venir, questionner, qui fait pas venir, qui problème. Tous les temps, je comprends. Et c'est la chose qui est pressée plus souvent, God Mohabbat, entre ses frères. God Mohabbat avec votre papa, avec votre maman, ça c'est important. Ça qui développe l'amour de ce zindagi-là. एक वक्त था जब घर घर में शब बारात या फिर मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौक़ों पर मदरसे के बच्चे फातिहा खानी के लिए जाते, और उन दिनों 20 या 25 पैसे पाकर तलबा बहुत खुश होते। एक ऐसी ही बच्ची थी जिसने इन पैसों से अपनी तालीम की फीस चुकाई थी। Et aussi, man du monde aussi peut venir getli, yang ha imam nous a ouvert une ouverture, un usine, un magasin, une chose.
Betul bin getli, jadi ngabin fait doa. Et ce doa, alhamdulillah, maintenant prospéré. Et dans quatre ans, une chose, ils prennent mes enfants madrasa, ils prennent aussi parfois, tous les temps pas mêmes enfants. Si ils prennent un principe, parce que madrasa, il y a beaucoup d'enfants, alors un principe pour les sans oser. Tous les temps pas même personne. Ils donnent tout la sens égale. Et pour toute l'occasion qu'il y en a, il y a tout, diverses choses. Alors, mes enfants, quand ils viennent à madrasa, pour mes enfants, il y a amené, qui se filles, qui se garçons, hein, pas seulement garçons seulement, pontifie tout dans les, mais il y en a un parmi là-dedans qui lui dit, quand tu parles katam, il y a un petit casse, puis 10 ou 25 copies, voilà. Alors, il prend il paye sur l'école. Et il paye sur l'école et il gagne sur l'éducation à travers ça. इमाम शेख इदरीस मोहम्मद बख्श दामद बरकतुम आलिया ने ये बात साबित किया कि इमामत सिर्फ 5 वक्त की नमाज तक महदूद नहीं, बल्कि इमाम का किरदार मुआशरे में दिलों को जोड़ने, नफ्स को पाक करने, नस्लों की तरबियत करने और उम्मत को मुत्तहिद रखने का होता है। मस्जिद इमाम के बगैर ऐसी ही है जैसे जिस्म रूह के बगैर। बिलाशुबा इमाम साहब की ज़िंदगी हम सब के लिए रोशन मिसाल है। अल्लाह पाक इमाम साहब की उम्र में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, सेहत कामिला अता फरमाए, उनकी खिदमात को कबूल फरमाए और हमें भी उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा करे कि दम आखिर तलक रहे कायम इमाम हक़ की ज़बां पर दरूदो नाते रसूल। नमाज इश्क़ की खुशबू महक रही है अभी, उसे संभाल के रखना यही है मिल्लत का उसूल। Comme souvenir, nous m'avons dit qu'il y a tellement de monde content lui, qu'il y a plusieurs présidents à Mazid même. Président sans eux, mais pendant 60 années, ils restent en place. Ça, l'amour qu'ils ont tenu pour lui là, je ne donne ni ça la casa pour rester. J'ai resté imam ça tente ou vivre, ou reste là. Sinon, si on m'amène des autres places, Miam a évacué la case, mais ici, je ne donne ni la chance pour rester. Ça, c'est un grand niyamat, ça. नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्स खुश नसीब खुशबख्त है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इमामत के लिए इंतखाब किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब शेख इदरीस मोहम्मद बख्श दामद बरकतुम आलिया जैसे इमाम वाकई खुश नसीब खुशबख्त खुशकिस्मत है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस अहम फ़रीज़ा के लिए इंतखाब किया। आज जिस मस्जिद में हम हैं, यही वो मस्जिद है जहाँ हज़रत शेख इदरीस मोहम्मद बख्श दामद बरकतुम आलिया ने अपनी ज़िंदगी के 60 साल 60 इयर्स इमामत में गुजारे हैं। बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत शेख मोहम्मद बख्श दामद बरकतुम आलिया की खिदमात को अपने दरबार में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और उनको दराज़ उम्र सेहत के साथ अता फ़रमाए और ताहयात उनका साया हम सब पर रहे। इस प्रोग्राम के तैयार में जिन लोगों ने भी ताउन किया, कोलैबोरेट किया, जिन लोगों ने भी मदद की, उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बार बार हाजी शेख इदरीस मोहम्मद बख्श दामद बरकतुम आलिया जैसी शख्सियात से नवाजे। और इन अशार के साथ हम आपसे रुखसत की इजाज़त चाहेंगे कि किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि बूढ़ा सही मगर दिल में है ईमान की हरारत। बूढ़ा सही मगर दिल में है ईमान की हरारत, यही तो है इमाम, ये हैं
امت کی۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اجعل مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب.